So, hi friend, this is Dr. Apurv Mehra. I am a graduate from one of the colleges in Delhi called as Maulana Azad Medical College. And it doesn't look like, but I am senior of Dr. Pranav Jain. I look much younger than him. Thank you for the compliments, and I love you for that. I am I am a resident of India, and Pranav Jain somehow decided कि America चलो. So Pranav bhai America chale, and now he is in United States of America, and he is witnessing whatever is happening there on the political front closer than we are. Pranav has been a COVID warrior, fighting on and saving a lot of patients during this time, and he has been vaccinated also, so he is safe. There is no social distancing. So that's why in this recording, you will not see us wearing any mask. And I am speaking from Delhi, and let us see Pranav bhai America mein kahan chale. Hi Pranav, how are you? Good. Welcome from Atlanta, US. So Apurv, long time no here. This is awesome. So last time we had a dinner 2 years back in Delhi, and you loved those paneer tikka which were pan shaped, as you told me yesterday. And we were waiting for you to come back here, but COVID had some other plans. So we were reading it in pathology books, and wherever coronavirus was mentioned, beneath it was written, "This virus is not significant." So just taking a line from that, anything can become significant overnight. Yes. You just have to travel through China. That's how it goes. So Pranav, when did you decide that you want to move on to America? So, final year medicine, I'm also a graduate of Maulana Azad Medical College, and as Apurv mentioned, he was 1 year senior to me. And Apurv, you've probably forgotten this conversation, or maybe not. But final year medicine final year MBBS खत्म करके हम मेडिसिन रोटेशन में इंटर्नशिप कर रहे थे एंड हॉस्टल में आई केम टू योर रूम एंड वी वर टॉकिंग कि अच्छा अब आगे क्या करना है तो पीजी की पढ़ाई कर रहा था तब एंड मेरा क्वेश्चन है कि पीजी करें इंडिया रहें बाहर जाएं और उस टाइम पे एटलीस्ट फॉर मी मेरे को बहुत पैशन था रिसर्च करने का आई वांटेड टू डू रिसर्च एक्चुअली ह्यूमन जेनेटिक्स microbiology, cellular biology में तो उस टाइम पे मैंने फिर डिसाइड किया कि probably US is a better option for those purposes और फिर you know of course you go through internship मैंने इंडिया में around 8 महीने काम किया after MBBS और बट मैंने US मूव करने का प्लान किया था तो मूव कर गया यहाँ पर आके रेजिडेंसी खत्म की इंटरनल मेडिसिन में what's funny is residency karte karte medicine was very very interesting so I never ended up going to for research core research bench research और अब यहाँ पे सेटल हो गया हूँ 10 साल हो गए यहाँ पर आए हुए So how time flies, Pranav? It's been a decade. And how is America treating you? Or I must say, how is Pranav treating America? Did you must have felt a difference? हाँ, definitely. I think ये डिसीजन बहुत बड़ा डिसीजन है मैं ये बोलूंगा कि जब मैंने डिसीजन लिया मैंने ऑब्वियसली बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि क्या ग्रेविटी है डिसीजन की आप यूएस आते हो आपको लगता है कि लाइफ बहुत अच्छी है एंड लाइफ अच्छी है आप कंफर्टेबल है लाइफ यहाँ पे ऐसा नहीं है लेकिन देयर आर लॉट ऑफ आपको बहुत कुछ देना यू हैव टू गिव अप अ लॉट my parents abhi sari meri family is still in India or now we have 2 kids and travel is very restricted especially in corona but even before it's difficult
आप अपने फ्रेंड्स गिव अप करते हो। मैं यहाँ पे बैठ के देखता हूँ तुम लोग सब जब चाहे जैसे मिल सकते हो, एंड इट्स अ लॉट ऑफ फन। लेकिन यूएस में आप इन सम वेज काफी आइसोलेट हो जाते हो। यू हैव टू स्टार्ट लाइफ फ्रॉम फ्रेश, और बहुत सारी चीजें कल्चरली जो तुम ग्रांटेड लेते हो वो यहाँ पे ग्रांटेड नहीं ले सकते। मेरे को भी याद है जब मैं शुरू शुरू में आया था यहाँ पे, मेरे को खाना नहीं बनाना आता, राइट? और रेजिडेंसी में 12-16 घंटे काम कर रहे हो, और फिर यू घर पे आओ एंड देयर इज लाइक ओके, खाना, यू हैव टू फिगर आउट फूड। इंडिया में कभी ऐसी चीजें प्रॉब्लम नहीं करती। सो आई आई थिंक अब 10 साल हो गए, वापस देखता हूँ तो सोचता हूँ कि उस टाइम पे कितनी इजीली सोचा चलो जी मुंह उठाओ पहुंच जाओ। लेकिन देयर इज अ लॉट, अगर थोड़ा बैठ के सोचें तो इतना इजी डिसीजन नहीं है, और ना लेना चाहिए इतना इजी। ये मेरी ओपिनियन है। राइट प्रणव, अगर हम अपने कमरे की एक कुर्सी भी लाएं तो हमारे को पैल्पेबल डिफरेंस दिखता है, और यहाँ तो हम पूरा अपने आप को हिला देते हम्म। हैं। एंड डू यू रिमेम्बर द छोले कुलचे वाला एट मैमसी? यू रिमेम्बर प्रेम का पराठा? यह तो हद कर रहा है। लाइक हम परसों ही बात करते हैं एक्चुअली प्रेम के पराठे की। मैं याद करता है कि मेरे को रेगुलर केचप का फ्लेवर खत्म हो गया था, उसकी कद्दू वाली केचप का ही फ्लेवर जो है वो याद रहता है। एंड यू रिमेम्बर ओल्ड बॉयज हॉस्टल ओबीएच? ऑफ कोर्स, ओबीएच, एनबीएच, मैमसी की हर एवरी कॉर्नर Let's मैगी का not discuss स्टॉल। about the corners because I think a lot of people will watch this, and we are married now. So let's talk about 2 for H. You remember 2 for H? ओह यस, आइकॉनिक मैन। 2 फॉर एच कौन भूल सकता है। पता नहीं लाइफ का कितना परसेंटेज टाइम वहां पे स्पेंड किया गया है। पता है प्रणव, यू वोंट बिलीव, मैं हमेशा से सोचता था इस जगह का नाम की क्यों है। बहुत सालों बाद मुझे रियलाइज हुआ शेप ऑफ अ की था वो। But I just want to share the IQ level I have. So Pranav, in the future discussions, let us talk about how to plan your exams for US. What all are the options in America, and how to build up your career. Yes. One thing I'm sure of, wherever we travel, we will often find Indian graduates, and there are people helping. And I'm sure similar would have been scenario with you. But I think let's keep it like an intro for the future lectures or future discussions, and let us try to decrease the anxiety of the Indian graduates and doctors of how is life ahead if they want to leave the country, the continent, and go to USA, going to the most developed nation in the world, establishing yourself there, and how you conquered what you all spoke about. So let's try to Um, wrap this up, Pranav. Let us take it as a mission, and let's enjoy whatever you are missing in India. Let me try to get back to you. So बहुत next बढ़िया, प्रेम के परांठे or तो मेरे को फेडेक्स कर दे। next time I'll get golgappe on the screen, and as I talk to you, I'll keep on eating them so that you don't miss it. So we've been roommates, we have been soulmates, we have been classmates, and means he's been 1 year junior, but we've been staying together. And he's not been a good cricketer, but even then we accepted him as a part of our group because he was good in cards, and probably the only criteria which decides formation of a group in a medical college. He was phenomenal in it, and that is gossiping, which you can figure out the way he laughs. So Pranav, love to your family. See you soon, man. Bye bye.